Алло. Женя, привет, получай. Солнышко такое, хорошо так. Утром, вечером не так жарко. Это самое, если надумаешь, приезжай. Я не знаю, буду ли я завтра работать, потому что мне Света еще ничего не сказала. Она мне должна до вечера написать или позвонить. Вот. Если я не буду работать, я тебе напишу. И ты можешь завтра ко мне приехать. Ладно? Работать буду, так я, может, к тебе заскочу. Ладно? Хорошо, спасибо. Ладно, спасибо. Нет, все нормально у тебя? Ты кушаешь, все? Да, есть мне, нормально есть. Давай, Жень, давай уже порешай как-то вопрос, потому что что так долго-то нельзя, это что, ты же себя всего уже измотал сам морально, ты просто этого не чувствуешь, и потом уже ты просто в обществе находиться не сможешь, понимаешь, ты чем дольше сидишь один, ты пойми это, тебе надо выходить, к нам приезжать. У меня есть общество тут, я тоже развиваюсь тут, разговариваю тоже. Так развиваешься, разговариваешь, но все равно надо общаться, надо ходить на пруд, надо гулять, ходить, хоть как-то что-то, чтобы было, это, приезжай к нам, ладно? Спасибо. Давай, я тебе напишу вечером или позвоню. Давай, пока. Давай. Согласись со мной. Ну вот это он думает о себе. Ну вот, зачем так говорить? Top 5 best Android emulators. With the several use of Android emulators, we use Android emulators for playing any Android games or any Android apps run on our PC with ease, with no difference when we play on our PC. It runs even more smoother than any Android device. In the market, there are a lot of Android emulators to see, and it's really difficult to know which one is better. Every Android emulator has some special features inside it. So here in this video, we will show you top 5 best, fastest and smoother Android emulators. But before beginning to this video, if you're new to my channel, kindly subscribe to my channel. Coming at number 5, here we have QIWI-Wallet Android emulator. It is really best freeware and light emulator built for gaming, which has been recently updated to version 1.4. Version 1. You are not good man, why are you laughing with me? Comrades. QIWI-Wallet Android emulator. It is really best freeware and light emulator built for gaming, which has been recently updated to version 1.4.1.
Whenever we first install KO Player on our system, it asks us about the speed mode or compatible mode. If you are running on average system specs, then you must use speed mode. But if you think you have a powerful machine, then you must select compatible mode. Hit the continue to start. When you open it for the very first time, it will start loading. Of course, there's a login with your Google account to access Play Store apps in this emulator. So this is the main interface of this KO Player, which is very nice. On the left side of the screen, it contains vertical bar consisting a lot of features to see, including keyboard control. You can adjust key mapping to your desired preference, shaking, screen rotation, camera, location, video recording, external installation of APKs, volume up and down, full screen, and many other features. In a Play Store where you can find all of your Android games and application, you can have a lot of fun in this emulator. You may also configure the settings of your desired preference in this emulator. If you go to advanced settings, you can even customize your RAM usage. If you think you have a powerful PC and running high RAM, then here you can even increase RAM usage. If you face any lag while playing any game, so you can use speed direct mode. Overall, I would say this is really great Android emulator for playing Android games. If you want to use KO Player, then you must know about some of the requirements before installation of KO Player on your PC. Coming at number 4, here we have Nox Android emulator, which has been recently updated to Nox 6.6.1.2 and contains Android 5 functioning. It works perfectly on Windows PC and Mac. Contains multiple controller support. Nox is one of the most stable Android emulator specially designed for gaming. The starting interface of Nox emulator 6.6.1 is quite amazing to see. It supports Android 5. It is fully loaded with Play Store, and the best thing here to see is the App Center. In the App Center, you can find all of the featured gaming apps. In the app management, it shows all of the apps downloaded, installed, and their updates. On the right side of the Nox vertical bar, quick features are ready to see, including maximize window, key mapping features for keyboard and game controller. You can even assign your own keys as you want, file assistant, external APK installer, and much more. Nox emulator supports multiple instances. In the multi-instance settings, you can even set frame settings, resolution settings, and much more. You can add new multiple window to Android 5 or Android 7. Android 5 is the official window on Nox for the best performance, while Android 7 is compatible with the latest games. Here I will recommend Android 7, then it will create new setup window for Android 7. In its multiple instance window, click on Start. Then the new window of Memo with Android 7 will open. It's really smooth and easy to control all of the multiple windows in Nox. Here inside a t-shirt icon, you will find a lot of themes. You can select any theme that you want. In a settings menu, you will find a lot of settings to see, including clean and backup. I personally like Nox. It is really stable Android emulator. If you want to play Android games, it's really best suitable for you. Coming at number 3 here on this list is LD Player. LD Player is Android emulator especially designed for gaming and a very powerful Android emulator that has been recently updated to 4.0.3. LD is fully loaded with Play Store, so we can access all of our gaming apps. In this emulator, we can also have LD Store, which is fully loaded with games and other Android apps. On the right side of LD Player, we have a column consisting all features including settings, keyboard mapping, volume up and down, full screen, screenshot, and much more. In a settings where we can see a lot of settings options. In a game settings, in a frame rate setup, you can play games up to 120 frame rate per second. You can even change a wallpaper in LD Player. LD Player supports multiple instances, so you can play several games simultaneously. LD is freeware and absolutely free to download and install on your PC. It supports up to Android 7.1. Coming at number 2 on this list is BlueStacks,
which is such a powerful Android emulator, competing all other Android emulators. It has been recently updated to version 4.2.4, and this update is quite amazing. I feel BlueStacks even more faster than the other previous version. No lag issues I personally found. BlueStacks supports Play Store like all other Android emulators. It also has a game center where a lot of variety of games are ready to install on your PC. On the right side of BlueStacks, where you will see a vertical bar consisting all of the features including screen zooming, volume increase and decrease, external APK installer, screenshot and much more. It has a play and win for gift cards, so you can claim these rewards in the reward center. Here in the menu icon in the settings you will find bunch of settings option. You may even customize these settings to your desired preference. You can also change skin of your BlueStacks as you want. If you think your BlueStacks is laggy on your system, BlueStacks give us a solution to fix these issues. Here in the menu at the bottom you will see speed up tips. Read and follow all of them if you think your BlueStacks is laggy. If you face any problem while using BlueStacks, then you need to go to the Help and Support Center where you can post your query. BlueStacks supports multiple instances, so you can access several apps simultaneously. To avoid lagging while using multiple screens, there is an eco mode. You have to enable it, which will fix lagging issues while accessing several windows simultaneously. So this is highly recommended. BlueStacks is laggy on your system. BlueStacks give us a solution to fix these issues. Here in the menu at the bottom you will see speed up tips. Read and follow all of them if you think your BlueStacks is laggy. If you face any problem while using BlueStacks, then you need to go to the Help and Support Center where you can post your query. BlueStacks supports multiple instances, so you can access several apps simultaneously. To avoid lagging while using multiple screens, there is an eco mode. You have to enable it, which will fix lagging issues while accessing several windows simultaneously. So this is highly recommended. If you want to install BlueStacks on your PC, then you must read some of the basic system requirements of BlueStacks before installation of BlueStacks on your system. Coming at number 1, here we have Mimo Android emulator. This is one of the best, smoothest, fastest and powerful Android emulator in the market. It has been recently updated to Mimo version 7.2.7. Mimo has been competing BlueStacks and Nox for the last couple of years. In my opinion, now it is one of the best, smoothest and powerful Android emulator for gaming and all other apps. Like other Android you will see speed up tips. Read and follow all of them if you think your BlueStacks is laggy. If you face any problem while using BlueStacks, then you need to go to the Help and Support Center where you can post your query. BlueStacks supports multiple instances, so you can access several apps simultaneously. To avoid lagging while using multiple screens, there is an eco mode. You have to enable it, which will fix lagging issues while accessing several windows simultaneously. So this is highly recommended. If you want to install BlueStacks on your PC, then you must read some of the basic system requirements of BlueStacks before installation of BlueStacks on your system. Coming at number 1, here we have Mimo Android emulator. This is one of the best, smoothest, fastest and powerful Android emulator in the market. It has been recently updated to Mimo version 7.2.7. Mimo has been competing BlueStacks and Nox for the last couple of years. In my opinion, now it is one of the best, smoothest and powerful Android emulator for gaming and all other apps. Like other Android emulators, Mimo is fully loaded with Play Store, so you can access all of your favorite Android games and apps. In the Mimo, in the Windows settings, here you can even fix
size. You can fix landscape if you face some apps running in a vertical screen size. You can also use full screen mode, key mapping feature to customize the keys, installation of external APKs, multi-instances so you can run multiple windows simultaneously, volume up and down, your location and many other features. Down below settings icon, you will see 3 dots horizontally. When you will click, you will see some additional features including screen shaking, screenshot, screen recorder and many others. The hanging GIF icon on Mimo will lead towards some of the most recommended gaming apps, which is recommended by Mimo emulator. If you go to the multiple instance manager window, here you can see that Mimo can support Android 7.1, which is the recommended version by Mimo. You can also use previous Android versions 4.4, 5.1. But my recommendation is Android 7.1 as it supports all of the latest Android games and apps. You need to click on it. It will generate that instance. Then after you need to click on start. Then it will start loading. Then after that you will see new window. So in this way we can use multiple instance window on Mimo without any lag. In the menu icon we have a settings option. Inside settings we have a lot of settings option. In the display settings we can even increase or decrease the frame rate. One of the great thing I personally found in Mimo, we can root Mimo, so we can access all of the rooted apps on Mimo. To get that, in the system settings in engine you have to turn on root mode, then hit the OK button. Then you need to restart Mimo. After restart, Mimo will be rooted. You can download and install Mimo on your PC. It is absolutely free to install. But before installation, make sure you must check the system requirements. Thanks for watching this video. Give the thumbs up if you really like this video. If I have missed any other Android emulator that we must try out, let me know in the comment section. Subscribe my channel and please click the bell notification icon. Нет, что, так надо лететь.
Programming, where we simplify programming with easy to understand whiteboard videos. And in this video, we'll be shortlisting best Android emulators for PC and Mac. So, let's get started. Number 1. BlueStacks. BlueStacks is an emulator compatible for Windows and Mac. The emulator is preferred for gaming and is quite easy to set up. Other than Play Store apps, you can also have option to download BlueStack optimized apps from its own app store. The emulator allows you to run Android applications and high-definition games on your system and does not require a lot of RAM for processing as well. And not to forget, it does offer custom key mapping so users can play mobile games with keywords applications and high-definition games on your system and does not require a lot of RAM for processing as well. And not to forget, it does offer custom key mapping so users can play mobile games with keyword setup and show impressive performance ratio. Number 2. Android Studios Emulator. We all know that Android Studio is the default development environment for Android. As it turns out, there's also an inbuilt emulator that you can use to test out your application or game. It is rather complicated to set up and is not recommended for consumer level usage. However, developers can simply use this tool as an emulator for testing their applications. To say in a nutshell, it's too much of a pain for a regular person but is excellent for a developer. Number 3. Game Loop. As the name suggests, Game Loop is an Android emulator specifically made for gamers. It offers a great compatibility for some major gaming titles like PUBG and Call of Duty Mobile. Further, it comes with excellent keyboard and mouse integration feature, making it an ideal choice for you if you desire performance for gaming. Number 4. Nox. Nox is another emulator which targets Android gamers. The best part of Nox is that it allows you to map keys of keyboard, mouse and gamepad as well. You can even assign keyboard keys for gestures, mapping shortcuts or for swiping right. Moreover, you can specify CPU and RAM usage in the setting option. Просто там все статики. Windows. Хитренький. А нормально, нормально. दोस्तों आज के टाइम में एमुलेटर खोजबीन करनी पड़ती है आप लोगों को, जब जाके आपको एक ढंग का एमुलेटर मिलता है। तो आप लोगों के ये काम बचाने के लिए मैंने वो रिसर्च करी आप लोगों के लिए एंड मुझे मिले कुछ ऐसे एमुलेटर्स जो कि लो एंड पीसी के ऊपर अच्छे से स्मूथली आपके गेम्स को चला सकते हैं। फिर चाहे आप लोग कोई एक हाई एंड गेम खेलो जैसे कि पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर अमंग अस, ये सभी गेम आप लोग खेल पाओगे इन एमुलेटर्स के ऊपर अपने पीसी के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे मौका दो और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाने का। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनकेस अगर इसको नहीं मालूम कि एंड्रॉइड एमुलेटर्स क्या होते हैं तो मैं उनको बता दूं कि एंड्रॉइड एमुलेटर्स की मदद से आप लोग जो मोबाइल के गेम्स होते हैं वो अपने पीसी के ऊपर खेल सकते हो। अब गाइस, अपनी वीडियो में सबसे पहला जो एमुलेटर है उसका नाम है एलडी प्लेयर। यहाँ पे जो इस एमुलेटर की रिक्वायरमेंट है वो है 2GB रैम 36GB हार्ड डिस्क और ये कंपेटेबल है विंडोज 7, 8, 10 के अंदर। अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आप लोगों को ये। बात करें अगर अपन इस एमुलेटर की रिव्यू की तो वैसे तो ये एमुलेटर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर अभी नया नया आया है। यहाँ पे इस एमुलेटर को इस हिसाब से बनाया गया है कि जो लो एंड पीसीज होते हैं उनके ऊपर ये अच्छे से वर्क कर सके और आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, हाई एंड परफॉर्मेंस। जितना कि मुझे अपनी रिसर्च से मालूम पड़ा है कि ये जो एमुलेटर है एलडी प्लेयर ये खास करके एक्शन मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए अच्छे से बनाया है, जैसे कि फ्री फायर, पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड इसी टाइप के सिमिलर जो गेम्स हैं उनके लिए। अब ये ऐसा कैसे कर पाता है, जो सबसे खास बात है वो ये है कि आपके पीसी के ऊपर ये ज्यादा लोड नहीं डालता एंड जीपीयू को भी इतना ज्यादा यूज नहीं लेता है और इसके अंदर काफी सारे गेम्स के लिए पहले से जो कीज होती है वो सेट होती है। तो आप लोग जस्ट गेम को इंस्टॉल करना होता है एंड ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है गेम के अकॉर्डिंग की बाइंडिंग्स। तो सोच क्या रहे हो, करे इस एमुलेटर को डाउनलोड। अगर आप लोगों को ये एमुलेटर पसंद आता है तो, नहीं आया तो अपनी लिस्ट में और भी काफी अच्छे अच्छे एमुलेटर्स हैं। तो जो नेक्स्ट एमुलेटर है उसका नाम है नॉक्स प्लेयर। बात करें अगर अपन लोग इस एमुलेटर की, इसका नाम है नॉक्स प्लेयर। तो ये मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए अच्छे से बनाया है, जैसे कि फ्री फायर, पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड इसी टाइप के सिमिलर जो गेम्स हैं उनके लिए। अब ये ऐसा कैसे कर पाता है, जो सबसे खास बात है वो ये है कि आपके पीसी के ऊपर ये ज्यादा लोड नहीं डालता एंड जीपीयू को भी इतना ज्यादा यूज नहीं लेता है और इसके अंदर काफी सारे गेम्स के लिए पहले से जो कीज होती हैं वो सेट होती हैं। तो आप लोग जस्ट गेम को इंस्टॉल करना होता है एंड ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है
गेम के अकॉर्डिंग की बाइंडिंग्स। तो सोच क्या रहे हो, करे इस एमुलेटर को डाउनलोड। अगर आप लोगों को ये एमुलेटर पसंद आता है तो, नहीं आया तो अपनी लिस्ट में और भी काफी अच्छे एमुलेटर्स हैं। तो जो अपना नेक्स्ट एमुलेटर है उसका नाम है नॉक्स प्लेयर। बात करें अगर अपन लोग इस एमुलेटर की जिसका नाम है नॉक्स प्लेयर, तो ये थोड़ा बहुत अपने रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। मतलब अगर आप लोगों का पीसी काफी ज्यादा लो एंड है, मतलब काफी ज्यादा, समझ रहे हो ना आप, तो आप लोगों को इसको सेकंड नंबर पे रखना चाहिए। जो पहले नंबर पे आपका एमुलेटर होना चाहिए उसका नाम है एलडी प्लेयर। सबसे मेन प्रायोरिटी आपको उसी को देनी चाहिए। ये एमुलेटर आप लोगों के पीसी के ऊपर जब अच्छे से वर्क करेगा, जब आपके पीसी के ऊपर 3 GB से ज्यादा रैम होगी, तब तो ये बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के पीसी के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हमेशा अपन सोचते हैं कि अपन लोगों को बेस्ट एमुलेटर मिल जाए, बट जो परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा डिपेंड एमुलेटर पे नहीं करती, ज्यादा वो डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो कभी भी आप लोग सोचो कि यार इस एमुलेटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB और अपने पास में अगर 3 GB रैम है तो वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा आउटपुट दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बात करें अगर अपने इस एमुलेटर की, तो ये एमुलेटर उन लोगों के लिए जिनके पास में ठीक ठाक एवरेज पीसी है, जैसे कि 4 GB रैम या फिर उससे ज्यादा हो। आप लोग भी इस एमुलेटर को ट्राई कर सकते हो। अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमुलेटर की जिसका नाम है मीमो। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट इस एमुलेटर की है 2 GB रैम मिनिमम है, एंड मिनिमम जो हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट है वो है 5 GB। बात करें अगर अपन लोग इस एमुलेटर की रिव्यू की, तो जो ये एमुलेटर है ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास में एक लो एंड पीसी है। ये बहुत ही लाइट वेट है एंड ये हाई क्वालिटी गेम्स आपको प्ले करके दे सकता है अपने ऊपर। दोस्तों इस एमुलेटर के ऊपर गेम तो इजी है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर कोई भी ऐप इंस्टॉल करना तो सीधे आप इसको पकड़ के जो ऐप होता है उसको सीधे इसके ऊपर ड्रैग करोगे तो वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके अंदर भी आप लोगों को सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अपना प्ले स्टोर हो गया, कीबोर्ड मैपिंग, बाइंडिंग। और मैं बता दूं कि जो ऊपर वाला एमुलेटर दोनों, उनके अंदर भी ये ऑप्शन था, मैं बोलना भूल गया था। एंड यहाँ पे जो एमुलेटर के लिए बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि अगर आप लोगों को कोई एक ऐसा चलाना है